friends, welcome to my YouTube channel. You are watching Study with Pratik, and today in Study with Pratik we are going to discuss the second part of first chapter of class 12 geography textbook India, People and Economy. The chapter is population, distribution, density, growth and composition. So till now in this chapter we have already discussed about the density of population, growth of population, population doubling time. And now in this part we'll be discussing, this part is going to be very small, and in this part we are going to discuss about the regional variation in population growth, that how regional variation, क्षेत्रीय जो अलग अलग कुछ ना कुछ होता है पॉपुलेशन ग्रोथ में, वो किस तरह से हमें नजर आता है, दैट विल बी डिस्कसिंग अबाउट इन दिस पार्ट. सो फर्स्टली, स्टेट्स विथ लो रेट ऑफ ग्रोथ not exceeding 20% over a decade are Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha, Puducherry and Goa. Here you can notice that most of these states, or you can say all of these states, are peninsular states. And we all know that peninsular states are the most literate states of India. So here you can see that the rate of growth is lower in these states and it is not exceeding over 20% over a decade. And all these states are the examples. Two of them, one of them is the Union Territory, that is the Puducherry. State with lowest growth rate in India is Kerala, that is 9.4 percentage. That is the growth rate of Kerala, and that is the lowest growth rate in India. That can be asked for a 1-mark question in your examination. State with relatively high growth rate, so 20 to 25% जिसकी growth rate है, जो high growth rate वाले states है उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्य आते हैं. अगर हम बात करें फॉल इन ग्रोथ रेट ऑफ 6 मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स ऑफ इंडिया की, जो 2001 से 2011 के बीच हुई है, इन कंपैरिजन टू 1991 टू 2001 के सेंसस के हिसाब से, तो जो फॉल इन ग्रोथ रेट है 6 मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स ऑफ इंडिया की इन दो डिकेड्स के बीच में, तो दिस स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. Now there are 3 main important points which may come for a 1-mark question or MCQ based question in your examination. That state with lowest fall in growth rate is Andhra Pradesh. Lowest fall in growth rate, जिसमें growth rate में का जो इजाफा है वो बहुत कम हुआ है. लोएस्ट फॉल जिसमें जो हुआ है दैट इज आंध्र प्रदेश, जिसका 3.5 पॉइंट्स के साथ हुआ है. स्टेट विथ हाईएस्ट फॉल इन ग्रोथ रेट की बात करें तो महाराष्ट्र इसका एग्जाम्पल है. 6.7% ऑफ पॉइंट से हाईएस्ट फॉल इन ग्रोथ रेट कहा जाता है महाराष्ट्र का. स्टेट विथ इंक्रीज्ड ग्रोथ रेट इन 2001 एंड 2011 की अगर बात करें तो तमिलनाडु एंड पुदुचेरी are 2 examples of increased growth rate in 2001 and 11. तमिलनाडु में 3.9% पॉइंट से और पुदुचेरी में 7.1% पॉइंट से. इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया. इंडिया के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो वो है ग्रोथ ऑफ इट्स एडोलेसेंट. उसके जो किशोर अवस्था के जो पॉपुलेशन है, किशोर पॉपुलेशन, वो ज़्यादा मैटर करती है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया की. प्रेजेंट शेयर ऑफ एडोलेसेंस की बात करें इंडिया की एज ग्रुप, एडोलेसेंट मतलब एडोलेसेंट एज ग्रुप है 10 to 19 का. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. 10 to 19 इंडिया में एडोलेसेंट ग्रुप कहा जाता है, जो जिसका प्रेजेंट शेयर है 20.9%. 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया में जो एडोलेसेंट्स की जनसंख्या है वो है 20.9% की. मेल एडोलेसेंट उसमें 52.7% है और फीमेल एडोलेसेंट उसमें 47.3 है. Need to guide them and channelize them properly. There is a high need to channelize and guide them so that they can make a proper nation. Challenges for society की अगर बात करें तो बहुत सारे challenges है आज भी सोसाइटी में, जो पॉपुलेशन ग्रोथ को कभी कभार नेगेटिवली हिंडर करती है. लोअर एज एट मैरिज, कई बार लोअर एज होती है स्पेशली वुमेंस की, गर्ल्स की. स्कूल ड्रॉप आउट्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा, लेकिन आज घट रही है आज के समय में, लेकिन फिर भी स्कूल ड्रॉप आउट्स आज भी होते हैं. लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की जो कमी जो बच्चों में एडोलसेंस में होती है वो ज़्यादा होती है. इलिटरेसी, कई भागों में देश के आज भी पढ़ाया नहीं जाता, उतनी शिक्षा नहीं मिल पाती बच्चों को या एडोलसेंट्स को जितनी उनको मिलनी चाहिए. हाई रेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी ऑफ एडोलसेंट मदर, कभी कभी एडोलसेंट्स जो मदर होती है, कुछ गर्ल्स होती है, वो उनका
वो कभी कभी प्रेग्नेंट हो जाती है और हाई रेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इसकी जिसके कारण हो जाती है कि क्योंकि वो इतने मैच्योर्ड नहीं होते कि दे कैन गिव बर्थ, सो दैट दिस हैपन्स दैट दे लीड टू द डेथ of both mother and the child. High rate of HIV and AIDS infections are also there in India. Physical and mental disability or retardedness is also prevailing. Drug abuse and alcoholism. You can see many examples are there in the current scenario also, that a lot of adolescents are sometimes taken into the part of drug abuse, taking drugs and consuming alcohol. Then there is juvenile delinquency. That is, in this juvenile delinquency, it is like the youth crime, you can say, the non-matured or the minor doing crime or the committance of crime, etc. If we talk about the National Youth Policy of 2014, that is NYP, also in short, acronym is NYP. So in this National Youth Policy, it is said it is designed to look into the overall development of our large youth and adolescent population. जो एडोलसेंट पॉपुलेशन है, जो हमारी लार्ज यूथ पॉपुलेशन है, उसके ओवरऑल सर्वांगीण विकास को देखने के लिए नेशनल यूथ पॉलिसी का डिज़ाइन किया गया था 2014 में इन द बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. Launched in February 2014. In 2014, it was launched in the February month. Holistic vision of youth of India. तो holistic vision पर ये focus करता है. It is to empower the youth of country to achieve their full potential and through them enable India to find its rightful place in community of nations. नेशंस की कम्युनिटी में इंडिया को एक स्थान प्राप्त कराने के लिए नेशनल यूथ पॉलिसी को बनाया गया, ताकि वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की यूथ इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके और इंडिया को एक ऐसी कम्युनिटी पे बिठा सके जहाँ पे वर्ल्ड क्लास लेवल और यू कैन से द इंटरनेशनल लेवल डिस्कशंस एंड द पोटेंशियल फुल डिस्कशंस हैपन्स, जहाँ पे एक्चुअल में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको शॉर्ट आउट करने का तरीका ढूंढा जाता है. फॉर एग्जांपल, यू कैन से द यूनाइटेड नेशंस. National Youth Policy of 2014, as it is defined that youth as a person in age group of 15 to 29. So we know adolescence is from 10 to 19 and the youth population is from 15 to 29 years, and this age group is a youth population of India according to the new this National Youth Policy of 2014. If we talk about 2015, then it was transformed and named as National Policy for Skill Development and Entrepreneurship by Government of India, that is NPSDE. That is National Youth Policy or National Policy for Skill Development, Skill विकास, ओके, क्षमताओं का विकास करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कदम उठाया और 2015 में इस पॉलिसी को स्थापित किया. Here you can see there is a chart of National Youth Policy of 2014 and what does it says. So thank you guys. This was a very short part. I'll be coming very soon with the next part of this, the last part of this chapter. Till that, stay tuned. If you have any doubts or question regarding this part, please feel free to DM me on my Instagram. The links are mentioned below in the description box. You can comment me down below in the YouTube comment section, or you can just ask me anywhere any doubts or any questions you would have regarding this topic or anything or any topic of class 12 geography. I am there to clarify all your doubts and questions and queries. I'll be coming up with the next video very soon. Till that, stay tuned, stay happy, and thank you very much for watching.